इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, लास्ट ईयर इट वॉज 16 अप्रैल जब रिजल्ट्स आए थे एंड 16 जून को नेक्स्ट प्रीलिम्स था, तो आई हैड दैट 2 मंथ का गैप। आई नो जब वो आता है एक फेलियर आपका 1 ईयर के लॉन्ग प्रॉपर एक जर्नी में रहने के बाद, एंड देन यू फाइंड योर सेल्फ जस्ट आउट ऑफ इट, यू आर स्टैंडिंग एट अगेन स्टेज 1, दैट इज़ द प्रीलिम्स, दैट इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। तो मैंने पहले डिसाइड किया था दैट आई वोंट अपीयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आई थिंक इस ईयर तो बहुत ही कम गैप है, यू हैव अ गैप ऑफ सम 1 month ओनली। लास्ट ईयर आई हैड 2 months for myself, so at least 10 days I could cry, and after 10 days I got back and I decided that just because 12 marks का difference है, maybe if I revise things properly, because throughout the preparation mains हो interview हो, I was in touch with the current affairs, I was in touch with my optional, I was in touch with the basic GS subjects, economics हो या budget हो, economy survey हो, so I realized one thing कि maybe if I can I'll go for it. There were many friends of mine जिन्होंने skip भी किया था वो attempt and they are appearing this year, so any of thing that suits your mental health is the one you should go for. अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन की है, if you can solve some of the multiple mocks, revise your previous year question and have revise your basics, that is NCERTs and the standard source, I would suggest that please go for this attempt, क्योंकि अगर आप ब्रेक लोगे then that would extend to another 1.5 year, and since you went till the interview you have all these potential to get through it. So please, if you have that अभी mental आपका ऐसा ability है कि you can go for it, go. If you want a break, that's also not an issue. Take a break, analyze on your mistakes, because mark sheets are already out. आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, किस में बुरा है, and accordingly you can do the value addition that is required. So in either case, the idea is to be very kind to yourself, and the idea is to go about things in a very graded manner, to not try to rush कि अभी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा फिर से मेंस लिखना है, नहीं, just look at, take one step at a time.